Good morning. So today we will discuss about reproduction in organisms. Okay. First, what is the definition of reproduction? What is reproduction? Reproduction is the period of before we go into reproduction, first we will discuss about lifespan. The period of birth to natural death of an organism is called lifespan. Okay, first lifespan. So what is lifespan? The period of birth. The period of birth to death of an organism is called lifespan. Okay, the life. No individual is immortal except unicellular organism. जिते भी यूनिसेलुलर माने एककोशी जीव मान अछंती एककोशी जीव मान को छाड़ी देले अन्य कोनोसी भी जीव माने इमोर्टल हेनांती माने अमर हे नथांती. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म माने से माने बाइनरी फ्यूजन द्वारा मल्टीप्लाई होतांती. गोटे रु दुईटा दुईटा रु चारटा चारटा रु आठटा एभला मल्टीप्लाई होतांती. ओके, तो बट अदर जिते भी ऑर्गेनिज्म रोचंती आइदर से प्लांट हो एनिमल्स हो से समस्त गोटे स्पेसिफिक टाइम पीरियड था. तो से बर्थ जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत से पीरियड को आम कही लाइफ स्पान. तो अप्रोक्सीमेट लाइफ स्पान किसी ऑर्गेनिज्म मानक जमीक फॉर एन एलिफेंट जोटा कि रोज 60 to 70 years. एलिफेंट्र पाखापाखि 60 to 70 years होता है लाइफ स्पान. गोटे रोज मे बी 100 years. डॉग 15 years लाइफ स्पान होता है. गोटे काउ 20 to 25 years लाइफ स्पान होता है. हॉर्स 30 years लाइफ स्पान होता है. एंड गोटे कईंचर 100 to 150 years लाइफ स्पान होता है. तो लाइफ स्पान वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म. इन देयर लाइफ टाइम every organism reproduce. Then what is reproduce? What is reproduction? So reproduction is a biological process in which an organism give rise to young one or offspring. Okay, reproduction. So it is a biological process. It is a biological process. It is a biological process in which an organism give rise to, in which an organism gives rise to young ones or their offsprings. तो जो प्रोसेस रे कौन ना कौन ऑर्गेनिज्म माने निजर यंग वंस मान को नेक्स्ट जेनेरेशन को जन्म दे थांती से प्रोसेस को आम कही थांती रिप्रोडक्शन. सो रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ ए स्पेसीज. जे कौन जाति कि प्रजातिर निजर जाति को आग को बढ़ावा जो प्रोसेस रिक्वायरमेंट करता ही आम कही रिप्रोडक्शन. सो रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ ए स्पेसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन. देन types of reproduction. The reproduction can be of two types, that is asexual and sexual reproduction. Asexual reproduction and another is sexual reproduction. Then first we will discuss about asexual reproduction. After this we will discuss about sexual reproduction in detail.
Okay, what is asexual reproduction? Asexual reproduction, it is the reproduction by single parent without formation of gamete. इतरे गैमेट फॉर्मेशन हुए गैमेट मीन्स जोटा आम कहे जुग्मक पुरुष जुग्मक कि स्त्री जुग्मक से गुड़ाक तैयारी हो न था। तो जो प्रोसेस रे पुरुष जुग्मक कि स्त्री जुग्मक तैयारी न था से प्रोसेस को आम कही था asexual reproduction. Okay, let's write the definition of asexual reproduction. It is the reproduction by single parent in which gametes are not fused or formed. तो जो प्रोसेस इट इज द रिप्रोडक्शन बाय सिंगल पैरेंट रही था गोटे सिंगल पैरेंट कौन करते ना गैमेट किसी केस रही था कि गैमेट फॉर्मेशन हुए नहीं आ किसी केस गैमेट जदि भी फॉर्मेशन हुए से फ्यूज होती है गैमेट जदि फ्यूज न हो फ्यूज होती माने फ्यूज है कि जाइगोट फॉर्मेशन करती दैट मीन्स जुग्मज तैयारी करती जुग्मज तैयारी न करी जदि से गोटे इंडिविजुअल रे कन्वर्ट हो जाए ताले तक आम कहे आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट केस हो प्लांट रे आम कहे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोली कहे मोस्ट ऑफ केस रे आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स रे होता आउ किसी लोअर ऑर्गेनिजम्स मानक होता। सो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे जो ऑर्गेनिज्म माने डेवलप्ड होती जो ऑर्गेनिज्म माने आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप होती जन्म होती से प्रायतः क्लोन होता से क्लोन बोली कहुए कौन पे कि पेरेंट्र एक्जाक्ट कार्बन कॉपी होता इक्वाल होता आइडेंटिकल होता पेरेंट देखा जो टाइप होता ऑफस्प्रिंग भी एक्जाक्ट सेम कॉपी होता। तो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गुड़ाक जनरली कॉमन होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मानकर इन प्लांट एंड इन एनिमल हैविंग सिंपल ऑर्गेनिजम्स आइदर प्लांट हो एनिमल हो जो मानकर सिंपल होता से ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चरली बहुत सिंपल होता से केस रे ही मोस्ट ऑफ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली डिफरेंट टाइप ऑफ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेकर आम डिस्कसन करवा से गुड़ा कहले बाइनरी फिजियन बाइनरी फिजन स्पोरुलेशन बडिंग गैमुलर फॉर्मेशन एटसेट्रा। सो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप्स रही पार से भर किसी आम डिस्कसन करुचे बाइनरी फिजन स्पोरुलेशन बडिंग गैमुलर फॉर्मेशन। तो बाइनरी फिजन जनरली बैक्टीरिया होता है और प्रोटोजोआ गुड़ाक होता है। तो मोस्ट ऑफ बाइनरी फिजन सिंपल तो मैंने क्लास 10 पढ़ी माइटोसिस विषय समय विभाजन को लेकिन। तो बाइनरी फिजन कौन होता है सिंपल माइटोसिस ही होता है गोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंपल से प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होता है दैट साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर दुईटा गोटे ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट होता है सिंपल प्रोसेस को हमें बाइनरी फिजन बोल कही। इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रायतः ऑर्गेनिज्म रे बाइनरी फिजन ही होता है। ओके
the nucleoid divides by amitosis. Amitosis